Hello everyone and welcome back to our another lesson. In this lesson, I'm going to discuss with you something that is very important in English lesson, that is all about article writing. So if you are attending CBSE or NCERT syllabus, then there will be always writing section to score marks. Okay, so here in this lesson, I'm going to discuss with you about article writing. So how can you score better mark in exam, and by learning what is the clear format of article writing and what is the marking scheme, and normally what are the grammatical rules that you have to follow to score better marks. So here in this lesson we will come to know all about article writing in English exam based on CBSE syllabus, and this lecture will end with a model article writing. So hope you will enjoy today's lesson, and let's get into the points without wasting much time. Okay, so my dear all, you can take your notebook and just copy down everything that you can see here on this whiteboard. So we just article writing. So this lesson will help you understand a common idea about article writing. And you know what an article writing is? Yeah, normally article writing is a kind of formal writing based on any common or current issues. कोई भी अभी जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ भी इवेंट्स हो गया है, तो कुछ ना कुछ एक करंट सिनेरियो के ऊपर कुछ ना कुछ बात के ऊपर डिस्कशन के थ्रू, नॉट लाइक डिस्कशन बट एक ऑफिशियल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेइंग आइडिया है जो आर्टिकल राइटिंग. ठीक, सो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है. ठीक है, एंड जस्ट लाइक यू माइट हैव रेड इन न्यूज़पेपर्स, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते तो उसमें अपने कई बार जो आर्टिकल राइटिंग देखा होगा कोई भी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड article writing. Okay, and there is a person there is a person to write article writing, and how that format follows, that we can understand just now. Okay, so the format you can just write down here on the board, look at and write down in the notebook. Format. First of all, there must be a proper title. एक title यानी heading होना जरूरी है. That will be on the center. That is headline. Okay. So hope it's clear to you. Headline means the center. Suppose this is a answer sheet. On the top, middle, you have to write headline or heading. You can write down here heading. Okay. Then after, who is writing this? Who has written this article? So that उसका नाम होता है byline. ठीक है, मतलब नहीं, जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसका नाम इधर लिखना होता है टाइटल के नीचे, थोड़ा सा स्पेस रखें. ठीक है. Then after what normally follows, title हो गया. Then after, the name of the author of the article. His or her name has to be written there, means your name. Okay, and then after there is paragraphs body. Okay, paragraph 1, paragraph 2, like that. Okay, paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. You can write 3 to 4, 5 paragraphs. Okay, so minimum 5 paragraphs can be there. Okay, but now we will discuss what has to be written in each paragraph. हर paragraph में main idea क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम अभी एक बार just discuss करेंगे. ठीक है, उससे पहले I will just give you a common idea about marking scheme. Marking scheme. ठीक है, format तो आपको clearly पता चल गया. There should be a heading and byline means the name of the person. ठीक है, उसके बाद में
पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो टॉपिक के ऊपर लिखना होता है, ठीक है. सो बिफोर एंटरिंग इनटू डिटेल what all the contents and matters has to be written in each paragraph, you will just come to understand what is the marking scheme. Okay. So बच्चों एक्चुअली मार्किंग स्कीम आर्टिकल राइटिंग के लिए CBSE और NCERT फॉर्मेट सिलेबस के हिसाब से 10 मार्क का होता है. आई थिंक यू नो दैट. ओके. सो द हेडिंग जो नॉर्मली हेडिंग प्लस बायलाइन जो होता है 1 मार्क. It carries 1 mark. Means format has to be kept very properly. Heading and byline score 1 mark. Okay. Then content 4 mark. Okay. जो आपने जो टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में मिला है तो उसके ऊपर आप पूरा का पूरा जस्टिफाई किया है कि नहीं. Okay. Whether you have written all the content, all the points very clearly in a systematic and logical way. तो content के ऊपर आपको मिलेगा 4 mark. Okay. So that you have to keep more concentration or focus on content to score better mark. Okay. Then after content के after जो होता है grammar and other all details, that is called expression. उसको कहता है इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशन. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है? How can you express your language? Yeah, the language is expressed through your style of speaking, the words you use, the grammar accuracy, and the phonics pronunciation. Normally in speaking, but when it comes to writing skill, हमारा जो language किस तरीके से express करना होता है? Of course, you have to use grammar. Then after words, spellings, everything. इसको हम एक छोटा सा वर्ड में लिखते हैं वोकैबुलरी. ठीक है. उसके लिए 2.5 का मार्किंग स्कोर होता है. ग्रामर का एक्यूरेसी, ग्रामर एक्यूरेसी. देन अप्रोप्रिएट वर्ड्स मीन्स जो वोकैबुलरी, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो जो लिखने के लिए, तो उसके ऊपर जो भी वर्ड्स मैच होता है मीन्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने प्रॉपरली यूज किया तो उसके लिए भी आपको स्पेशली मार्क स्कोर मिल जाएगा. ठीक है. कॉल्ड वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग. स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप जितना भी अच्छा पैराग्राफ लिखो देन यू विल गेट अ लेस मार्क ड्यू टू स्पेलिंग मिस्टेक्स. सो यू हैव टू फोकस ऑन स्पेलिंग एक्यूरेसी आल्सो. ओके. सो अभी कितना बाकी रह गया? 2.5 मार्क रह गया. ठीक है. यह हियर इट कम्स ऑल अबाउट आइडिया एंड स्टाइल. होप आपको दिख रहा होगा. ठीक है. हियर इन दिस पार्ट here I have written 2.5 mark. आप जो लिखते हो जो आइडिया का जो लॉजिकल कनेक्शन मीन्स एक आइडिया आपने डिस्कस किया तो तुरंत उसको ऑपोजिट आइडिया में लिखेगा तो दैट डजंट साउंड गुड. या सो इफ देयर इज एन आइडिया that is clearly discussed, then that has to be there in one paragraph. And if you want to tell something opposite on that idea, a separate paragraph has to be taken. Okay, so that's called all about style and idea means logical connection. Okay, all these things gets 2.5. So totally 10 marking scheme में आपको मिलेगा article writing. Okay, I'm trying to explain these things very slowly because there are many students, I know that, in our batch and in our world, of course. So take time to understand. Okay, it's not the video that I am making just for very fast understanding for anybody. Okay, this is a basic concept. You will have to understand the way you understand. Okay, so you can watch this video again and again. And जो भी टॉपिक मैंने आपको अभी डिस्कस किया सुनिए समझ में नहीं आया तो एक बार जिस बैकवर्ड करके ध्यान से सुन लो. ये मार्किंग स्कीम किसके लिए क्या क्या एरिया के लिए स्पेशली अलॉट किया गया है
10 mark. Okay? Keep it in your mind very carefully. Heading has to be there byline. अगर इतना आपने लिखा है तो you will get out of 10 1 mark. Okay, that is for. And then after, if your content is very good, means you have been writing on the topic very well and the content is almost good, then you will get 4 mark. Okay? And the rest 5 mark is for your language expression. Language expression is through your grammar, tenses, active passive voice, okay, and even of course appropriate words and spellings. So all these things will be considered in the marking scheme when an examiner checks your answer, especially your article writing. So then after, you will have to just focus on coherence, means your ideas that you are discussing on that particular topic, whether you are following that sequence based on ideas and relevance. Okay, what is the relevance related to the current issue? Okay, and style of your writing. All this matters. The rest of the 2.5 mark. Okay? So hope this concept, this idea is very, very clear to all of you. Okay. Okay, so my dear all, now let's discuss in detail on the format very clearly. And the first thing that you have to write is heading, means the title. Okay, so I will give you detailed information how can you score better mark. You can just listen very carefully. Heading has to be written very, very eye-catching, very striking. Okay, means जो heading देके जो reader को समझ में आना चाहिए, जो नीचे लिखा हुआ content पूरा कौन सी topic के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है. So here what you want to do is that it should be very catchy. Okay, right? Catchy heading. Right? Catchy heading means it should be very nice. It should be attention seeking like heading. Okay, so how many words that you have to use in a heading? कितना words limit होना चाहिए? You know that? Yeah, an official format it takes around 5 to 6 words. Okay? In a common way, heading एकदम catchy होना चाहिए, एकदम striking, एकदम clear होना चाहिए, ठीक है? And that has to be written in about 5 to 6 words. 5 to 6 words के अंदर जो heading होना जरूरी, ठीक है? So just copy down this note to your notebook. and ये जो याद रखना है, ठीक है? जब भी आप लिखते हो आर्टिकल राइटिंग एग्जाम में, तो ये जो प्रैक्टिस आपको पहले करना है, ठीक है? वो टिप्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ आफ्टर दिस डिस्कशन ऑन format. Okay, so this is the first one that you have to write on heading. Okay, and next one में आपको ध्यान रखना होता है, अपना नाम लिखना है ना. After the heading, what do you want to do? You have to write your name. That is called the author, the name of the author of an article. Okay? When you write an article for your exam, remember that you can write your name, you can write your full name, but please do not give any personal information. Okay? What do you want to do? Keep it in your mind. Do not write personal information. ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ ताकि आप अपना नोटबुक में भी कॉपी डाउन कर लो और याद रखना, ठीक है? जस्ट ओनली वन थिंग यू हैव टू राइट just below the heading is your name only. Okay, why I repeat the idea for your benefit that you remember and keep it in your mind. Okay, so do not write personal details. That is what you have to keep it in your mind. Okay, personal details लिखना नहीं होता है, ठीक है? So that's called what you want to write in byline. Okay, and what is the third one that you have to focus on? Body. Okay, ये है जो मेन पार्ट, सब कुछ मेन पार्ट ही होता है आर्टिकल राइटिंग में. एंड बॉडी मीन जो आर्टिकल का जो कंटेंट आइडियाज के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है? हेडिंग. ओके, नॉट हेडिंग, बॉडी. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑन दिस पार्ट, बॉडी. नाउ बॉडी में क्या चीज़ याद रखना होता है? यू नो, it is the main part of your writing. It is the main part of your writing piece. That is, okay. It generally consists of how many paragraphs?
3 to 4 or 3 to 5 paragraphs. Okay, so let's discuss on each paragraph what it has to be concluded in paragraph 1. Do you know what has to be written in paragraph 1? Paragraph 1, normally you know that it is an introduction. Okay, what is it? It is the prescribed that you begin the introduction. It is an introduction passage. Clear? बच्चों लोग समझ में आया जो paragraph 1 introduction, ठीक है? और introduction में कितना words या कितना sentence लिखना है, that is all you have to understand. Okay, so I'll give you some basic idea on that. And introduction has to be very nice. Based on, you can just use any quotes. You can use any quotes, and that can be, the sentence can be 3 to 4 or 3 to 5 sentences you can write. Okay, means all about what the article is going to be discussed in the coming passages. जो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए एकदम अटेंशन जो रीडर को इंटरेस्ट लगे वो आगे रीड करने के लिए, ठीक है? तो उसमें थोड़ा बहुत कोड्स यूज कर सकते हो जो टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है? तो नॉट मोर देन 5 सेंटेंस, ठीक है? याद रखना है जो इंट्रोडक्शन पैसेज पैराग्राफ 1 5 सेंटेंस से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, इन जस्ट राइट डाउन, इंटरेस्ट होना चाहिए आगे रीड करने के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट पैराग्राफ 2 paragraph 2 and 3 is all about what? Content. And what kind of content? You are required to do a complete analysis of the matter. Okay, paragraph 2 and 3. Okay, a complete analysis. Analysis means उसके ऊपर पूरे का पूरा आपने वो कंटेंट के बेस पे लिखना होता है, ठीक है? ए कंप्लीट एनालिसिस ऑन द टॉपिक, a complete analysis on the topic, and it is called the content. Okay, so you'll have to write it in 2 or second paragraph and third paragraph हो सकता है that. Okay, so it's called the paragraph that is all about the discussion on the matter, on the topic. Okay, and you can here discuss problems. You can discuss various problems. You can discuss various problems. Okay, and relate the idea to present time. अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, अगर आपको लग रहा है वो अभी के टाइम में वो होगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो आइडिया आप प्रेजेंट टाइम के साथ भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट द कंटेंट क्लियर एनालिसिस. ओके, यू हैव टू डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम, यू हैव टू एनालाइज, एंड यू हैव टू डिस्कस व्हाट इज द रिलेशन दैट कैन बी टू द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में वो प्रॉब्लम को क्या रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? वो किस तरीके से हो सकता है. ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव टू keep it in your mind when you write an article. Okay, तो होप आपने जो लिख लिया. चलो और थोड़ा कुछ डिस्कशन आपके साथ करूंगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में क्या क्या होना है, ठीक है? सो होप यू हैव टेकन नोट्स टू योर नोटबुक. ओके, okay, so you understood first paragraph and second paragraph and third paragraph what content has to be written. Okay, here what you want to remember is that you have to develop a cause and effect relationship. What is cause and effect relationship? Develop a cause effect
relationship. You can write down and I will explain to you. What is cause and effect relationship? Means you have to talk on, you have to discuss, and you have to develop ideas in your mind. What is the topic is all about, and what are the problems related to that one particular event or anything else. Okay? उसका रीजन क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है. तो उसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत आइडियाज लिखना है. supporting facts and data. Okay, so what you want to do is that you have to use facts and data to just talk on. That means to develop your content, to write about the topic. Okay, and what is the reason? Cause means कारण क्या है, ठीक है, and उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, ठीक है. उसके रिलेटेड आपको उसका सपोर्ट करने के लिए कोई भी रेलेवेंट करंट फैक्ट्स और डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. You can use supporting facts and data to explain that content of cause-effect relationship. Okay? So that article will look more meaningful and more beautiful. Okay? Of course, you can just score better mark for your exam. Okay? So this is a good idea that you can just follow that. Okay? And let's come to paragraph 4. Okay, and it does not mean that you write in paragraph 2 and 3 all these things. You can write one more paragraph, 2, 3 and 4 paragraphs you can use to develop your content. Okay, so here in the next paragraph, what you want to do is that this is all about conclusion. Okay, this is all about, it can be the 5th paragraph. Okay, it can be the 4th paragraph. Okay, it's all about how many paragraphs you choose. More than 5 paragraphs is not good. Okay, the ideal paragraph is 1 to 5. Okay, minimum 5 or 4, that is ideal. Okay, so here the last paragraph is all about conclusion. Okay, and what is the meaning of conclusion? You have to mention what all the points that you have written in this content, that you will have to all the problems जो आपने elaborate explain किया है एकदम डिटेल में, वो आपको एकदम नटशेल में कंक्लूड करके आपको कंक्लूजन में लिखना है. ठीक है, इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. कि कंक्लूजन हैज टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, एकदम शॉर्ट एंड एकदम क्लियर, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए. ठीक है, एंड यू कैन जस्ट end the article writing in conclusion with you can use any quotes. जैसे आपने इंट्रोडक्शन में एक कोट यूज किया है, एक थॉट या कोट यूज किया है, तो उसके हिसाब से उसके जैसे कंक्लूजन में भी आप एंड कर सकते हो एकदम शॉर्ट. के मोर देन 5 सेंटेंस इज नॉट गुड एक्चुअली. 3 to 4 और 4 to 5 पैराग्राफ 5 सेंटेंस से ज़्यादा कंक्लूजन में होना नहीं चाहिए. ठीक है, and it has to be very short and precise, and you can use any quotes to end your article. Okay, so hope this is the one that you have to keep it in your mind. Okay, hope आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया पूरा इस वीडियो में, इस लेक्चर में. ठीक है, so all these things if you follow you can definitely score good mark and you can of course improve your writing skill. Okay, so I told you that I will give one example of article writing. तो ये जो वीडियो के साथ में नहीं मिलेगा, तो वीडियो के नीचे एक लिंक सब्सक्रिप्शन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा. तो आप लिंक क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्लॉग में जाएगा, तो वहाँ आप एक एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल राइटिंग रीड कर सकते हैं. ठीक है, सो होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, एंड इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स. एंड as you are a language beginner, you will get lots of benefits from these videos, from this lesson. So hope you will enjoy coming videos also, and subscribe and press the bell icon so that you will not miss any latest updates. Okay, and of course you can share this video with your friends if you have learned something from this video. Okay, thank you for watching and thank you for
learning.